Hello students, today we are going to start with your exercise 3.4. This exercise contains questions related to mode. So first of all we will understand the concept of mode, the theoretical part of concept of mode, and after that we will solve your question number 1, 2, 3 and 4. It is quite an easy, mean और median से ज़्यादा easy आपका mode रहेगा. So let us start with it. Okay, hello students, we are going to start with your exercise 3.5 today. ठीक है, and in that we are going to study mode. We have already studied mean and median. This would be your you can say third, you can say measures of central tendency. We studied कि mean is a you can say average. It is also known as arithmetical mean, geometric mean. वो हमने average we have studied. Then we have also studied the middlemost value is known as median. Why we use median? Because when the value is quite high, when the difference between the two variables in your data is quite high, then we need to have a better and means of analysis, that is median. Then the third one is mode. This is the easiest means of measuring central tendency. And why we need mode? For example, there is one theater. ठीक है, एक थिएटर है and the owner wants to know what should he stock. मुझे क्या स्टॉक करना चाहिए? तो he will find out that 10 customers took popcorn. ठीक है, and 5 customers took samosa. And 1 customer took, you can say, water. So maximum number of customers they opt for popcorn. So over here 10 is the you can say value which is repeated. Sorry, popcorn is the value which is repeated maximum number of time. So I should stock popcorn. Got my point? So mode का मतलब क्या होता है? Let us understand the theoretical part of your mode. So the theoretical part of mode, what is mode? Mode is the value of the observation which is repeated maximum number of time in the given data. जो भी डेटा आपका दिया है उसमें जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, जैसे मैंने बोला ना, नंबर ऑफ पॉपकॉर्न, it is useful, you can say repeated maximum number of time. So I should stock more popcorn, less of samosa. So that is what is your mode, and that is how it is mainly useful in business commerce or business में it is quite useful. Okay, as I told you, it is the easiest means of you can say central tendency to find out. Ungrouped data का जो formula क्या रहेगा? What would be your formula for ungrouped data? The Z. अच्छा, mode को it is you can say symbolized as Z or F0. ठीक है, in some cases you will find Z or in some cases you will find M0. Both are correct. ठीक है. So the formula for ungrouped data would be Z is equal to the number of observation which is repeated maximum number of time. For example, let me put 2, 4, 4, 6, 3. So over here 4 is repeated twice. So 4 will be my mode. Easy. So for ungrouped data, the formula is the number observation which is repeated for maximum number of time. In some cases it can be ill defined as well, that we will discuss in you can say further part. Okay, now we'll move on for the grouped data. For the grouped data के लिए हमारा formula क्या रहेगा? In grouped data, for discrete frequency distribution, value of observation which is having maximum frequency. For example, if it is given 1, 2, 3, 4, ठीक है, this is your xi and आपका fi है 3, 4, 6, 8. So 4 is a number which is repeated 8 times. So 4 is your mode. Got my point? So for group data also it is quite easy to define your you can say mode. Then in third, next would be continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution के लिए आपका formula क्या रहेगा? Formula would be L plus Fm minus F1 divided by 2 Fm minus F1 minus F2 into C, where L is equal to lower boundary point of the model क्लास. पहले हम लोग मॉडल क्लास फाइंड करेंगे. ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी रहेगी? द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी.
class with maximum frequency will be your model class. ठीक है, so L will be lower boundary point of the model class, F1 will be the class preceding the model class. Suppose if third class is having your maximum frequency, तो second class will be your model class. ठीक है, Fm is equal to frequency of the model class itself and F2 will be you can say frequency of the succeeding class. जो भी F2 की क्लास है उसके नीचे वाली जो क्लास होगी that is F2 और उससे पहले जो होगा that is F1. समझ में आया? दिस इज F1. Fm से ऊपर जो होगा that is F1 and Fm क्लास से नीचे जो वैल्यू होगी that will be your frequency of succeeding class. When we will do the sum, it will be easy for you to understand. Next would be your class length of the C into C जो है C will be class length of the model class. ठीक है, now as I told you in some cases your value is ill defined. आपकी जो value है of mode is ill defined. In that case we make use of empirical formula. Empirical formula का हम use करते हैं. When is it ill defined? When the class length of the you can say class interval is given, it is not you can say equal class equidistant नहीं है, or in some cases when there are the repetition is same, मतलब two numbers are repeated twice, 2 is repeated twice, 3 is repeated twice. So in that case we will make use of this empirical formula. What is your empirical formula? Our empirical formula is Z is equal to 3m minus 2x bar. क्या है? 3m minus 2x bar. M is equal to median, x bar is equal to mean. So first you have to find mean, then median, and then 3m को mode को median को you have to multiply by 3 and minus 2x bar. This will be your answer for your, you can say this will be a formula, empirical formula when you can say mode is ill defined. जब mode ill defined होगा तब हम लोग इस formula का use करेंगे. ठीक है, ओके, लेट अस मूव फर्दर. यहाँ पे दिया हुआ है देखो, for example, why this formula, this empirical formula will be used. Each observation appears just once in a raw data or more than one you can say value is having maximum frequency. मतलब 2 की frequency क्या है 4 and 3 की frequency भी 4 है. So both cannot be mode. So in this case we will make use of the empirical formula. ठीक है, more than one observation in the distribution is having you can say हाईएस्ट वैल्यू किसकी? दो लोग की ज़्यादा, एक से ज़्यादा की, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया. नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वल क्लास लेंथ इज देयर. मतलब फर्स्ट की क्लास लेंथ है 5, सेकेंड की क्लास लेंथ है 10, है ना, थर्ड का क्लास लेंथ है 15. सो हाउ यू विल डिफाइन द क्लास? 5 लेंगे, 10 लेंगे, 15 लेंगे. तो व्हेन क्लास इज इल डिफाइंड, अनइक्वल क्लास लेंथ है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी विल मेक यूज ऑफ दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला. देन in some part of your question it is discrete frequency distribution and some part it is a continuous frequency distribution. मतलब your data is having both discrete and continuous frequency distribution. At that time also you will make use of this empirical formula. ठीक है, and right hand or left hand side of curve is too extended. मतलब you are not having, you can say either the negative side or the positive side is too extended. Normal curve of your data is like this. If your curve is something like this or something like this, in that case you can say you will make use of this empirical formula. Okay, so there are certain situations in which we can use the empirical formula. When a mode is well defined, we will make use of empirical formula. Okay, let us move further. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले एडवांटेज क्या है ऑफ मोड? इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. मैंने अभी आपको बताया, अभी अब जब हम सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.5 तो आपको पता चल जाएगा मीन और मीडियन से बहुत ईजी है. इट इज़ जस्ट बाय लुकिंग यू कैन फाइंड आउट द मोड. यू डोंट हैव टू पुट फॉर्मूला, जस्ट लुक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ योर मोड. ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज. इट इज़ जस्ट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन. उसमें इफेक्ट किसका पड़ता है? रिपीटेशन का. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज बाय मेकिंग, इट कैन बी यूज computed by using the graph as well. ठीक है. Second disadvantage, it is not rigidly defined, so you cannot you can say rely on the
रिजल्ट, ठीक है. मोड कैन नॉट बी फाउंड, समटाइम्स मोड इज इल डिफाइंड, ये चांसेस बहुत पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है. ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इंक्लूडेड. कौन सी मेथड में सारे ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होते हैं? मीन इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. सो it excludes maximum number of observation. It takes into consideration the observation which is repeated. Repetition is considered, all the observation is not considered. So that is why it is also, for that this reason also statistician find it less reliable. Then its stability is less than mean, reliability is also less than mean. It is not used for any mathematical calculation में उसका यूज़ करते नहीं है. It is used in business and commerce, ठीक है, to find out what to you can say stock कैसे करना है. For that reason it is used. Okay, so this is all about the theoretical part of your chapter exercise 3.5. Let us go to your exercise 3.5. अब ये जो फर्स्ट सेकेंड और सम जो है ना, वो तो हम लोग बिना उसके भी कर सकते हैं. किसके? कैलकुलेशन के. लेट्स अस सी. फॉर एग्जांपल, इट इज़ गिवन दैट द IQ level of the students in a class is given below. It is 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 146, 140 and 135. Now you have to see, अगर आप इसमें देखो तो there is one number which is repeated thrice. Which is that number? It is 138. 138 एक ये है. Then we have one more place, we will find it as 138. This is 138 and this is 138. दो तीन. There are the three places where you would find देखो 138, 138, 138 यहाँ पे and 138. So you will write down here the observation 138 is repeated thrice, which is highest. Thus here Z is equal to, or M0 is equal to 138. Easy, just we have to observe and you can find out the value. Clear? Next question, let us do the next question. इसमें क्या दिया हुआ है? Find the following table is given is having the number of cakes sold on each day at a bakery. Find the mode of the sales of the cake. That is your second question. Now over here it is given number of cake 10, 12, 13, 16, 17, 18 and number of days. 10 cakes 5 days हुआ, 12 will be 9, 13 is 25, 16 is 16, 17 is 10 and 18 is 7 times. ठीक है, 7 days, 18 cakes 7 times. तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? यू कैन सी दिस इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. यस और नो? 13 की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज कितने? हाईएस्ट. तो यू कैन राइट डाउन हियर the observation having maximum frequency is 25 is equal to 13 cakes. Thus M0 or Z is equal to 13 cakes. That is your answer. Okay, so first and second question, quite an easy peasy question. I don't think you have to do some more calculation as such. Now the third one would need a little bit of calculation. Let us see. The distribution of age is given below. Which formula will be appropriate for the mode y? Okay, now what you have to see over here, that the class interval over here is not same जो हमने अभी देखा था 50 to 60. क्लास इंटरवल C कितना है इसका? 10. और सेकेंड का C कितना है? 60 to 65, it is 5. Then we have 65 to you can say 70, that is 5. Then you have 70 to 85, that is 15.
85 to 100, that is 15. So class interval is 10, 5, 5, 15, 15, which is not equal. That is why here you can say mode is ill defined. Mode is ill defined. You cannot make use of the formula of mode. ठीक है. So we will make use of which formula? We will make use of the formula of empirical formula. कौन सा formula use करेंगे? We will make use of the empirical formula. And what is your empirical formula? Empirical formula is equal to z is equal to 3m minus 2x बार. तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना है? x बार भी फाइंड करना पड़ेगा, मोड भी फाइंड करना पड़ेगा. So what will be your formula for mean? Mean is equal to sigma f into x upon n. That is your formula for mean. And you can say median का formula क्या है? L plus n by 2 minus CF upon f into C. This is your formula for mode. So we have to apply this two formula and we have to solve our sum. Let us move further. See, I have written the question beforehand. So अब हमको क्या चाहिए? You have to first of foremost we have to find out, you can say mean. मीन है तो आपको क्या फाइंड करने का? सिग्मा एफ एक्स. नाउ एफ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट एक्स. एक्स के लिए हमको क्या चाहिएगा? मिड वैल्यू. तो यू हैव टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू. तो एक हमारा कॉलम बनेगा, वन कॉलम वुड बी योर मिड वैल्यू. यहाँ पर एक मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे. ठीक है, मिड वैल्यू का कॉलम बनाएंगे तो एफ एक्स अपॉन एन. एन ऑलरेडी आई हैव, यू कैन से फाउंड आउट द एन. तो ये 48 रहेगा. अब दूसरी फॉर्मूला विच यू विल हैव टू अप्लाई इज योर मीडियन. मीडियन के लिए आपको क्या चाहिएगा? मिड वैल्यू तो चाहिएगी, मिड वैल्यू, उसके अलावा चाहिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो द टू कॉलम्स विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर एज पर आवर फॉर्मूला वुड बी मिड वैल्यू एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अ पार्ट ऑफ इट. लेट अस मूव फर्दर. यू कैन सी आई हैव फाउंड आउट द मिड वैल्यू. मिड वैल्यू क्या है आपकी? 50 to 60, 50 plus 60 divide by 2, that will give you 55. 60 to 65, so it will be 60 plus 65, 60 plus 65 divide by 2, that is 62.5. 65 plus 70 divide by 2, that is 67.5. 70 to 85 plus 85 divide by 2, that is 77.5. 85 plus 90 divide by 2, that will be your 92.5. this is your mid value. हमने पहले से फाइंड कर ली है. सो एस टू सेव अवर टाइम. अब हमको फाइंड करना है एफ एक्स. एफ एक्स का मतलब है यू विल मल्टीप्लाई दिस कॉलम विद दिस कॉलम ऑफ एक्स. सो दैट विल बी 6 into 55 will give you 330. 10 into 62.5 will give you 625. 19 into 67.5 will give you 1282.5. And 9 into 77.5 will give you 67.5. 4 into 92.5 will give you 370. Now the total of this 330 plus 625 plus 1282.5 plus 675.5 plus 370 will be your 3305. This is your sigma fx. ये क्या है आपका? sigma fx. So हमको sigma fx मिल गया. तो let us find out your mean. Mean is equal to mean मीन इज इक्वल टू, अरे यार आजा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3305. दैट इज 3305 अपॉन 48. फाइंड आउट द वैल्यू. आंसर विल बी योर 68.85. कितना होगा? एक्स बार इज इक्वल टू योर 68.85. क्लियर. सो हमने मीन फाइंड कर लिया. नाउ लेट अस फाइंड आउट. ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. अगर नहीं किया है तो एक बार वीडियो पॉज करके पहले मीन कंप्लीट कर दो. नाउ लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स. सेकेंड थिंग यू हैव टू फाइंड इज मीडियन. मीडियन के लिए हमको सबसे पहले तो मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी. द फॉर्मूला विल बी n बाय तुथ ऑब्जर्वेशन क्लास. ठीक है. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग आउट दैट आपको सी एफ फाइंड करना पड़ेगा. सी एफ फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे? 6 विल बी देयर. 6 प्लस 10 विल बी और 16. 16 प्लस 19
16 plus 19 will be your 35. 35 plus 9 will be your 44. 44 plus 4 will be your 48. So 48 is your cumulative frequency. अब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, that is n by you can say to ऑब्जर्वेशन क्लास. तो वो क्या है आपका 48/2 ऑब्जर्वेशन क्लास, that is 48/2 will be your 24th observation. Now we will see your CF class and we will find out this class where it is 35 है ना. तो 35 उसको थोड़ा इस तरह से करेंगे. So 35 that is 65 to 70. This is your median class. 65 to 70 is our median class. So let us put the formula of your median 65 to ये हट जा भाई 65.70 का median class की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन योर फॉर्मूला. ओवर हियर आवर L वुड बी योर 65. L प्लस n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 24 माइनस CF होगा आपका 16 35 के ऊपर वाला अपॉन F विल बी योर 19 into C class interval 65 to 70 it is 5. Okay, so let us put the value in our formula. All of you remember the formula by now I feel so. M is equal to L plus n/2 minus CF upon F into C. So we'll put the value in our formula, that is M is equal to L की वैल्यू क्या है 65 minus L plus प्लस n/2 की वैल्यू है 24 माइनस 16 अपॉन f की वैल्यू है 19 इंटू 5 65. तो आपको क्या करना है 24 माइनस 16 डिवाइड बाई 19 इंटू 5. डू इट ऑन योर कैलकुलेटर. 24 माइनस 16 डिवाइड बाय 19 इंटू 5, दैट विल गिव यू 65 प्लस 2.11, that will give you 67.11 years. So this is your mode. Yes or no? Mean हम already find कर चुके हैं. What was your value for mean? Mean की वैल्यू क्या थी? Should I rub it off? Okay. Mean की वैल्यू थी आपकी 68.85 और मोड की वैल्यू थी आपकी 67.11. ठीक है, मीन और मोड फाइंड कर लिया हमने. नाउ यू हैव टू फाइंड पुट द वैल्यू. एम्पिरिकल फॉर्मूला का रखेंगे. m0 इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार. 3m मतलब 3 इंटू 67.11 माइनस 2 इंटू 68.85. ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू. अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 इंटू 67.11 करेंगे. मैं इसको रब कर देती हूँ. 3 इंटू 67.1 करेंगे, दैट विल गिव यू 201.33 माइनस 2 इंटू 68.85 विल गिव यू 137.7. दैट विल गिव यू फाइनल आंसर है 63.63 years. Hence you would write down the mode as per empirical formula m0 or z is equal to 63.63 years. So mode of, you can say, age of old men in a old age home is 63.63. Okay, this is all about your question number 3. Clear with this? Okay, now let us go to your question number 4. यहाँ पर दिया हुआ है comment on the mode of the following data showing the time taken in seconds for 8 competitors in running race. Now here they have asked you to comment. आपको क्या बोला है? comment करना है, solve नहीं करना है ना. you don't have to solve, you have to just comment. तो comment करने के लिए पहले हम देखेंगे. वैल्यू फर्स्ट है 25.2, देन 26.5, 28.6, 32.1, देन वी हैव 29.0, 29.3, 31.3, 27.8. Now none of this value there is not a single repetition. एक भी वैल्यू में repetition नहीं है. So what you will write down here, every observation
occurred only once. ठीक है. Thus mode, that is Z or M0, is ill defined. In this sum also, last sum also it was ill defined, in this sum also it is ill defined. Therefore we will use empirical formula. Fine. So this is your empirical formula of mode. ठीक है. So this is your question number 1, 2 and 3, 4 of your exercise 3.5. I want all of you to complete question 1, 2, 3, 4. Complete question 1, 2, 3, 4 and illustration of this type. Question number 5 and 6. This question number 5 and 6, as you can see, 5 and 6, they are something related to your graph के लिए है. तो मेरे पास आज we will do this graphical sums tomorrow. Okay, so let us continue with this your sums in the next class. Complete your question number 1 and 2 and 3 and 4. Goodbye for now, students. Stay home, stay safe.